Namaskar students. In this video, we will discuss the topic of distribution of factors of production of lesson number 15, economic development. So, the no nation in the world that they have the lots of and abundant resources. The resources are limited. No country in the world that they have possesses the all kind of the resources in an abundant quantity. So the resources are the limited, so we have to use these resources very judiciously. पूरे दुनिया के अंदर कोई कंट्री ऐसा नहीं बोल सकता that I have the all the resources, the abundant resources, minerals, petroleum, all the other resources, water, and these all the resources. No nation in the world that possesses the all kind of the resources in abundant quantity. So that's why we have to save the resources. The resources are the limited, so it is our human duty, because of the human welfare we have to save these resources, because of the human wants are unlimited and uncountable. So the first point is also, and it can be asked in your examination as a question, the human wants are unlimited human wants, uncountable human wants. Because of increasing that science and technology day by day, the human wants from the ancient time to today onwards, the human wants are unlimited and uncountable. हमारी इच्छाएं, इंसानों की इच्छाएं अमर्यादित है, कभी उसकी विश पूरी नहीं होती. आज हमने ये डेवलपमेंट किया, आज हमने ये किया, तो आगे का फ्यूचर में वी हैव ऑलरेडी प्लान रिगार्डिंग अबाउट डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल कि आपने एक छोटा सा व्हीकल खरीद मतलब परचेज किया, साइकिल या तो टू व्हीलर, फिर उसके अच्छे मॉडल का आगे का जो टू व्हीलर्स है, फिर फोर व्हीलर्स. अब बंगलों के अंदर एक छोटा बंगला है, फिर आप उससे बड़े बंगले की आप जो वांट्स रखेंगे, उसके अंदर फिर फर्नीचर. और द ह्यूमन वांट्स आर, इन शॉर्ट, द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल because of science and technology. So resources are the limited and the human wants are unlimited, and this human wants is satisfied these resources only. So that's why we have to control we have to save the resources. Human wants day by day the increasing in the world and in our nation also. So it is very important to look out that to save and to control of the resources. So first, that is the topic, the unlimited human wants. Second, the important order in terms of necessities. The human wants are unlimited, so we have to make a order of the important things. Which things we have to fulfill first, which things we can postpone, and which things we can cancel, because it is not necessary to fulfill the every things and every wants in this nation of every woman, of every human. So that's why we have to make the important and necessity of order of our human wants, of our wishes. हमको एक ऑर्डर तय करना पड़ेगा कि कौन सी विशेष हम फुलफिल कर सकते हैं, कौन सी विशेष हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कौन सी विशेष जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं. फॉर एक स्मॉल छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि आपके पास 10 रुपीज है और आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आपको भूख भी लगी है और आपको दो थिंग्स परचेज करनी है. फर्स्ट, एक एग्जाम के लिए आपको पेन परचेज करनी है, और दूसरा आपको भूख लगी है इसलिए आपको नाश्ता करना है और आपके पास सिर्फ 10 रुपीज है. तो विच थिंग्स यू हैव टू फुलफिल फर्स्ट, विच थिंग्स you can postpone and which things you can cancel. तो आपको उसमें the individually have to decide the which things you have to fulfill first. तो आप ऐसा डिसीजन लेंगे कि सबसे पहले मेरी जरूरियात है वो है पेन है फॉर द एग्जाम. नाश्ता जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बट दैट टाइम द इंपॉर्टेंट टू परचेसिंग ऑफ द पेन फॉर योर एग्जामिनेशन. जस्ट लाइक दैट, the resources are the limited, which resources we should use first we have to decide it.
कोई एक जमीन का एक टुकड़ा है, एक लैंड है, कलेक्टर के पास बहुत सारी उसके लिए एप्लीकेशन आई कि भी इस लैंड के ऊपर स्कूल बनाने के लिए परमिशन मांगी, हॉस्पिटल के लिए परमिशन मांगी, गार्डन के लिए मांगी, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ वन लैंड. बट द टर्म्स ऑफ ऑर्डर, विच थिंग्स नेसेसरी फॉर दिस एरिया, उस एरिया में स्कूल की जरूरत है, गार्डन की जरूरत है, थिएटर की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है. सो दैट पर्सन हैज टू डिसाइडेड दैट which things fulfill the first, because the resources are the limited and our uses and our options are the unlimited. So that's why it is the important of order in terms of necessary. Third number, as I discussed, the limited resources in the world, in our nation, all the resources are the limited, especially minerals, petroleums, and different resources are the limited. So we cannot use these resources as a unlimited. हम उसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते. We must use these resources as a judiciously, as a scientific matter, as a scientific manner. So the resources are the limited, so we should control and we should the judiciously way use these resources. And the last, the alternative use of the resources. As I told you, the resources are the limited and the uses are the multi-purpose. Resources limited है और उसके जो uses है वो कैसे मल्टीपर्पस है. फॉर एग्जाम्पल कि एक खेत है, एक फार्म है, उसके अंदर आपको अलग अलग क्रॉप ग्रो करने का आइडिया आया कि वी शुड ग्रो दैट द बाजरा और मेज और पैडी और शुगर कैन. सो ओनली वन क्रॉप you can cultivate on that particular land, on that particular agriculture. ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई वही एक ही जमीन के अंदर पैडी भी डाला, अंदर व्हीट भी हो गया, शुगर कैन भी हो गया, एक साथ सब क्रॉप कैन नॉट बी टेकन इन वन पर्टिकुलर लैंड. सो द usages are the multi-purpose, but we have to choose only one option. So it is the alternative use of the resources. We can use the resources alternately, one by one. एक साथ एक समय पे एक ही resources we cannot use. So these are the distribution of the factors of production of our country, of any country of the world. Unlimited human wants, that is important question, it can be asked. Important order in terms of necessity, limited resources, and alternative use of resources. Dear students, now the important topics of this lesson will start now. And this topic, the three topics of this lesson. In the next video, we will study very deeply of these three topics. And the name of the topic is the method of allotting resources. Three are the methods we will discuss in our next video. Just I give the highlights and outline of this topic. First, market mechanism. It is also called the free economy, it is also called the capitalist method, it is also called the price mechanism. We will study the benefits of market mechanism and limitations of market mechanism. Then after, socialist system, benefits of socialist system and limitations of socialist system. Then after, we will study mixed economy. It is also called the controlled economy and benefits and limitations of the mixed economy. So it is very important topic of this lesson. तीनों ही टॉपिक के benefits, limitation, benefits, limitation, benefits and limitations. So it is called the topic of the method of allotting resources. Resources are in limited way, so that's why different nations of the world has organized the different method. What is the market system? किस तरीके से देश ये रिसोर्सेस को अपने लोगों की तरफ, अपने देश के लोगों के प्रति वो पहुंचाता है. दैट इज वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म, व्हाट इज सोशलिस्ट मेथड एंड व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. थैंक यू.